आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था बेटा? करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो पढ़ी थी हमने। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी, तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो पढ़ ली थी, राइट? बेटा जवाब तो दें, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? सर सिर्फ इंट्रो पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? सर हमारा मॉर्निंग सेक्शन भी है, हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बाद हमारा लेक्चर नहीं हुआ। सर सिर्फ एक लेक्चर हुआ है आपका। अच्छा, नहीं तो आपकी कंबाइंड क्लास लास्ट टाइम जो हुई थी वो? उसमें आपने बैलेंस शीट और वो पढ़ाया था, इनकम स्टेटमेंट। हाँ जी, तो उसके बाद करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो हमने पढ़ी थी। अच्छा चलें, सर नहीं पढ़ी थी। अच्छा चलें, ठीक है, इट्स ओके। चलें हम दोबारा से इस चैप्टर को एक दफा देख लेते हैं। बुक सबके पास है ना मौजूद? यस सर। Okay. Okay, today we are going to start our topic, which is financial statements and the ratio analysis. This is chapter 3 of your book. The given book to you people is the Gitman book of financial management. And with the passage of time, when we are completing this chapter, we are having such learning objectives, like the number one objective is there. We are going to review the contents regarding the stockholders report and the proceedings for consolidating international financial statements. Now then we will understand how the financial ratios are calculated, how they are being used while making some financial decisions. Then we are going to use these financial ratios to analyze the firm's liquidity and activity. Then we are going to discuss about the relationship between the debt and financial leverage. And we will study the ratios which are related to your financial leverage and debt. And again, we are going to analyze. Then again, we are going to analyze these ratios for the firm's financial health. Then we are going towards the financial profitability ratios, because the main objective of a firm is always there about uh, the health of the firm, and we are going to target a single goal, which is the profit maximization of the firm. So the profitability ratios are also very important, and how it is being calculated and how it is being used for your decision making for future aspects.
Then we are going to summarize these financial ratios and the DuPont system of analysis we are going to use for the complete ratio analysis. So these are the objectives of this chapter, and let's continue with our first topic of this chapter, which is about the financial statements. There are 4 key financial statements which are available when we talk about the financial statement of any firm which is commencing its business in any part of the world. These 4 key financial statements are very important while analyzing the financial analyzing the financial health of the system. So these 4 key financial statements are given as follows. Number 1 is the balance sheet. Second is the statements of stockholders' equity or statements of owner's equity, whatever you want to call it. And then we have the statement of cash flow and the income statement. So these are 4 key financial statements which are available for financial analysis. तो यहाँ तक हमने जितनी भी बातें की उसका मतलब ये है कि जब हम एक फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो की एस्पेक्ट्स हैं, जो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनमें हम 4 किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम देखते हैं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करने के लिए कि वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और कैसा बिजनेस कर रहा है. नंबर 1 इज द इनकम स्टेटमेंट, सेकंड इज द बैलेंस शीट, थर्ड इज the statements of owner equity or stockholders equity, whatever you want to call it, you can call it, or simply you can call it the statement of equity as well. Then there is a statement of cash flow, that what kind of cash is inflowing towards your business and what cash is outflowing from your business. So these are the 4 key financial statements. One by one, we are going to discuss these statements that we can get an introduction about these different 4 kinds of statements. Already you have gone through these financial statements in your accounting courses. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, आ रही है। जी सर आ रही. ओके. कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. कहीं पे अगर कोई आपको नहीं समझ आती बात की तो यू कैन आस्क. जी शाकिर महमूद साहब ने हाथ खड़ा किया है. जी शाकिर, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है. जी बताएं क्या मसला है. कुछ नहीं, बस सर समझ आ रही है. अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया था, मैंने कहा पता नहीं कोई क्वेश्चन पूछना है आपने. ओके, let's talk about the income statement first. The first primary financial statement which is very much needed by any firm or the decision makers or the board of the directors or the financial manager, that what kind of income we are generating from our business. So income statement is basically made for 1 year, and we are going to describe the period for which we are going to construct our income statement. We are going to establish our income statement for a certain period of time. This is not going to be a specific date. This is going to be a time period or time slot which we can describe that this is the income statement for which period. So like here is an example that most common are the income statements covering a 1-year period ending a specified date. Ordinary December 31st of the calendar year is generally described as the ending date of the financial statement, which is income statement. So here is just an example. If you can see the table 3-1, this is the Barclay Company income statement. All the figures which are given below are in thousands of dollars. सर आवाज बहुत कट रही है आपकी. बेटा आपकी तरफ कोई इंटरनेट का इशू है, मेरे पास तो आवाज बिल्कुल ठीक है.
नो सर, आपकी आवाज कट रही है वैसे ही। सर इंटरनेट ठीक है हमारा। प्रेजेंस शो कर दिया कर सर है इतना ठीक है इतना ठीक है थोड़ा एक्चुअली बेटा वो मैं इसको एक तो वही इतना अनअवॉइडेबल पहले रीजंस हैं जो उनसी उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बात अब तो आ रही हम है यूनिवर्सिटी से बैठ के पढ़ाते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट जैसा चलता है वैसा ही आ सकता है। चलें वो खैर, दिल दर्द भी कर दी मतलब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं टेबल 3-1 तक। ये एक आपके सामने एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट गिवन है। माइक बंद हाँ। करें जिसका भी माइक ऑन है। क्या है मेरा बहुत जी, ये एक बार्टलेट कंपनी है जिसका हमारे पास इनकम स्टेटमेंट गिवन है। जितनी भी फिगर्स हमें नीचे दी गई हैं वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की शक्ल में दी गई हैं। तो यहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट नजर आ रही है, तो इसका एक फॉर्मेट है। आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा हुआ होगा जब आपने अकाउंटिंग का कोर्स पढ़ा है, अकाउंटिंग 1 एंड अकाउंटिंग 2। तो आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है ना? यस सर। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास ये तमाम हेड्स मौजूद होते हैं। जिस तरह के हम पहले बात करते हैं सेल्स रेवेन्यू, देन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट cost of goods sold from the sales revenue and which results into the gross profit. Then we will go towards the operating expenses. Again, it is going to be subtracted from your gross profit. And there are different types of operating expenses available in any firm. That is selling expenses, general and administrative expenses, lease expenses, and depreciation expenses. These are called the operating expenses of a firm, and these are going to be subtracted from your gross profit. And now we can come up to the operating profit. So we are having an operating profit which is again going to be very crucial for the firm, and we are going to subtract the interest expenses. This operating profit, sometimes called as net income before interest and taxes, net earning before interest and taxes, or earning before interest and taxes, whatever you want to call it. In different books, different type of figures are given for this particular operating profit. So now we are going to subtract interest expenses from it, and this is going to be the net profit before taxes. And then we exclude taxes from the net profit before taxes, and we will get to the net profit. And then we are going to subtract the profit stock if it is available in your equity. If it is not available, then the profit stock dividends can be omitted from this income statement. So now this is the earning in the last, which is the figure for 2012. It is given $221,000, which is available for the common stockholders. And now again, it is depending upon the management, the board of directors, what kind of dividend they are going to give. As earning per share for the year 2012 is $2.90, and for the year 2011 it is $1.81. But again, it is depending upon the board of directors that they are only giving $1.29 per share as dividend, and the remaining amount will be retained as retained earning. यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो बेटा? यहाँ तक कोई बात किसी को समझ ना आई हो? सर ठीक है, आगे समझ। दोनों क्लासेस मौजूद हैं? यस सर, दोनों क्लासेस Yes. मौजूद हैं। Chalo, that's very good. Okay, so this is all about the income statement. So you are well aware of the income statement. Here is again an income statement given as an example. So income statement, if it is a company which is providing the services, you can see here are the salaries which are taken, interest received,
dividend received. So these are all the things which are from the other income. Total income is there, then we are having different expenses, and this is going to be the cash surplus, total expense, cash surplus, deficit, or this is also called the profit. Now we are moving towards the balance sheet. Balance sheet is again a summary of the statement of the firm's financial position at a given point in time. It will show the current assets, current liabilities, then there are fixed assets, fixed liabilities, then owner's equity. The capital of the firm is given in this balance sheet. So we will talk about the balance sheet with an example down there, so you can better understand which are the heads of the balance sheet. This is again a Bartlett company, which balance sheet is given, and all the figures are again given in the thousands of dollars. On the left hand side, you can see on the top there is written assets, which is cash, then marketable securities, accounts receivable, inventories, total current assets, land and building. Then there is machinery and equipment, furniture and fixtures, vehicles, and all other financial assets which are there. And we are going to less the accumulated depreciation, net fixed assets are there, and then there are total assets. So this is the balance sheet asset side, and now we are talking about the liability side and the stockholders equity side of the balance sheet. There are accounts payable, notes payable, accruals, total current assets, total current liabilities, long-term debts, including financial lease, total liabilities, preferred stock. Again, there is common stock available for the capital, then paid up capital in excess of par of on common stock, retained earning is there, stockholders equity is there, and the total liability of the stockholders equity is there. So these two figures are going to match, while total assets and the total liabilities and stockholders equities have to be matched for being a good balance sheet, for a true balance sheet. So this is the balance sheet heads which are given. So you have already made and you have gone through many of the balance sheets you have made in your previous courses. So there are certain things which we can understand from here. One thing is for sure that we are going to list the assets and the liabilities in the liquidity proportionate. The most liquid asset, the most liquid liability is going to be on the top, and then it is going to be in descending order from the top to bottom. Like in the end, we are going to have the next fixed asset, and in the end, we are going to have the capital over here, and the total current long-term liabilities are there. So these are the liabilities which are not in current in nature. These are not liquid liabilities or liquid assets. So that's why it is written in the end of the balance sheet. So the thing is, we are going to list it down as a descending order through the liquidity parameter. What is retained earning, by the way? Anyone who can explain what is retained earning? Can anybody explain retained earning? सर वो वाली रकम जो सर शेयर होल्डर को नहीं दी जाती वो रिटेन अर्निंग होती है। अच्छा, कोई भी रकम जो शेयर होल्डर्स को नहीं दी जाती वो हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। कोई और इसको बेटर एक्सप्लेन कर सके? सर वो वाली रकम जो हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट हमारे पास आया उसमें से हम कुछ रकम जो है इन्वेस्ट करते हैं दोबारा बिजनेस में, वो रिटर्न अर्निंग होगी। चलें इन्वेस्ट ना भी करें, बट यू हैव टू होल्ड दिस portion of earnings or the profit for the future investment. Okay,
जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त उसको इन्वेस्ट कर दें, आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं एंड दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर कैपिटल इन योर बैलेंस शीट, राइट। ओके सर। वो क्या होता है कि जो रिटेन अर्निंग आप रखते हैं वो आपकी रिटेन अर्निंग जो सी है एक पार्ट बन जाता है आपका कैपिटल का इन बैलेंस शीट। यही इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का आपस में लिंक है। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो एंड पे आपके पास जो अर्निंग आती है, अर्निंग आपकी या नेट इनकम आती है, नेट इनकम का एक पोर्शन आप डिविडेंड पर शेयर के मद में दे देते हैं, एक पोर्शन जो सा है उसका बच जाता है। जो पोर्शन आपका बच जाता है वो एज अ रिटेन अर्निंग आप उसको होल्ड कर लेते हैं और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग जब बनाते हैं आप तो उसके अंदर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो वाली रिटेन अर्निंग जो क्लोजिंग बैलेंस उसका आता है वो आप बैलेंस शीट में इस पोर्शन में जाके रखते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं यहाँ पे। नजर आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अब अगर आप देखें रिटेन अर्निंग जो सी पिछले साल थी 1012 यानी $1.012 मिलियन। अगले साल $1.135 मिलियन हुई। ठीक है, ये कैसे हुई? जो हमारे पास इनकम में से हमने पोर्शन था, अगर मैं पीछे आपको इनकम स्टेटमेंट दिखा सकूं, इस इनकम स्टेटमेंट में से तो अगर आप ये देखें कि आपने यहाँ पे अगर इन्होंने कैलकुलेशन की हो रिटेन अर्निंग की, इन्होंने पर शेयर ही की है, तो ये आपके पास अगर आप देखें तो 2.90 है और उसमें से 1.29 आपने पे कर दिया है। तो जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बनी है उसको आप मल्टीप्लाई करें अपने कॉमन स्टॉक के साथ तो वो आपकी रिटेन अर्निंग्स बनती है। ओके सर। तो उसको आप यहाँ पे बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं, इसमें पुराने बैलेंस में इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर हुई बात? यस सर। ये एक और एग्जांपल दी हुई है इन्होंने बैलेंस शीट की। आई होप के बैलेंस शीट में आपको कोई मसला नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें जो अभी हमने बातें कही वही रिपीट होंगी। रिटेन अर्निंग बैलेंस इट इज ऑन January 1st 2012 which was $1,012। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर 2012 हमारे पास आ रहा था 231। लेस किया हमने कैश डिविडेंड पेड फॉर 2012, प्रेफर्ड स्टॉक बीच में से माइनस हुआ, कॉमन स्टॉक बीच में से माइनस हुआ और आपके पास जो फिगर आया टोटल डिविडेंड पेड आपके पास आया 108। ऐसे ही है। जी सर। अब इसको हमने लेस कर देना है ऊपर वाले दोनों फिगर्स के साथ, तो नीचे जो एंड रिजल्ट आपके पास टोटल अर्निंग बैलेंस रिटेन अर्निंग बैलेंस आएगा वो आपके पास $1,135 आ रहा है। और यही आपने अभी पीछे अगर आप देखें तो आपने ये बैलेंस शीट में यही कोट किया है। ठीक है जी सर। बेटा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। बार बार फिर आगे चल के हम बातें करेंगे तो लोग कहेंगे कि जी हमें तो पता ही नहीं लगा सर, ये समझ नहीं आ रही, तो दिस इज नॉट गुड। अभी आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। Okay, let's move on towards the statement of cash flow. As I have already told you that the cash flow statement is basically telling you about the cash inflow and outflow from the company.
It provides a summary of the firm's operating, investment, and financing cash flows and reconcile them with changes in its cash and marketable securities during the period. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, For sir. further detail, we are going to discuss it later on in the chapter 4. So for the time being, the statement of cash flow, you must understand that it is going to be a summary of firms operating, investment, and financing cash flows, whether it is inflow of the cash or whether it is outflow of the cash, and the changes which are being made in different heads of accounts. Accordingly, we are going to report it, and it is going to be a change in the cash and the marketable security during the period, and it is being reported in your statement of cash flow. So it is basically the summary which is the cash is generated in positive or negative for a particular period of time. Then there are again a very important aspects of the financial statements, which are notes to the financial statement, because when we have reported some figures in our balance sheet, income statement, statement of retained earning, or the cash flow statement, we have to provide the elaboration for the understanding of the reader or the regulator, that what calculation we have done to come up with these figures. So notes to the accounts are given in the end of the financial statements. So these are having the elaboration, definitions, and calculations, which policy we are adopting, and everything is written over here in the notes to the account. Let's go further with our financial ratios. There are different types of ratio comparisons which are available. We do the cross-sectional analysis, we do the benchmarking, and then we go for the time series analysis. These are three types of analysis available. So first we will talk about the cross-sectional analysis. This analysis basically involves the comparison of different firms' financial ratios at the same point in time. Analysts are often interested in how well a firm has performed in relation to the other firms in its industry. Frequently, a firm will compare its ratios values to the other to those of a key competitor or a group of competitors that it wishes to emulate. This type of cross-sectional analysis called benchmarking has become a very popular. बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपनी कंपनी का एक रेशियो एनालिसिस करते हैं. मुख्तलिफ किस्म के रेशियो एनालिसिस अवेलेबल हैं. हम आगे चल के पढ़ेंगे कौन कौन से रेशियो एनालिसिस होते हैं, किन किन फिगर्स का हम रेशियो एनालिसिस करते हैं. डिफरेंट रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं. आप ऐसे ही समझ लें जैसे कि आप अपनी क्लास में से किसी एक बच्चे का अगर कोई स्कोर आया है, जिस तरह के फर्ज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका ए ग्रेड आया है या उसके 46 मार्क्स हैं या 47 मार्क्स हैं, तो वो अपने कंपेटिटर के साथ देखेगा कि उसके कितने मार्क्स आए हैं. अगर उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं तो फिर उसको वर्क करने की जरूरत है कि ये कोर्स में इसमें ज्यादा मार्क्स लिए जा सकते थे तो मेरे मार्क्स कम आए हैं. लेकिन अगर उसके कंपेटिटर से उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो इसका मतलब है कि इस कोर्स में मार्क्स ही कम आते हैं, तो लेकिन फिर भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, सो अमंग द अदर्स आई एम द बेस्ट. So this technique is called cross-sectional analysis and also called the benchmarking. Benchmarking is basically you are comparing your ratios with the best practices available in your particular industry. बात की समझ आई? जी सर. आगे. Yes, sir.
आप लोग माशाल्लाह काफी मतलब ज़हीन लगते हैं, मेरी हर बात को समझ जाते हैं जल्दी से ही। जिनको समझ नहीं आती वो लगता बोलते ही नहीं है। सर आती है थोड़ी बहुत समझ, वो एक दफा पढ़ेंगे ना दोबारा तो फिर ठीक हो जाएगी। अच्छा चलें, जो बाकी लोग हैं जो बोल ही नहीं रहे, माशाल्लाह 47 के करीब इस वक्त स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन है। चलें, as they wish. Okay. So this was the cross-sectional analysis, and here is an example for the financial ratios of the selected firms with a comparison to their industry medium value. Number one is Dell is there, Hewlett Packard is there. Then for the computer company, there is Home Depot, Lowe's. For building material, there's Kroger, wholesale food market, grocery stores. There are Sears and Walmart, and these are merchandising stores. So here are different kinds of ratios which we are going to discuss in a later lecture. First is the current ratio, quick ratio, inventory turnover ratio, average collection period, total asset turnover, debt ratio, net profit margin, return on total asset, return on common equity. So basically these are different kinds of ratio which we are going to calculate for a firm to analyze the financial health and the financial performance of that very firm. For Dell, if you can see, it is 1.3. Quick ratio is 1.2. For inventory turnover ratio, it is 40.5. But for that particular industry, if you can see, for Hewlett Packard, which is HP, the current ratio is 1.2. So for Dell and HP, you can compare that 1.2 and 1.3. They are around each other, but Dell is much better to compete in the industry. So you can compare in the ratios in the particular industry. For computers, there, if you can see, this is the industry average, which is given, that is 2.5. Dell is performing well ahead of HP, but again, it is below the computers industry average. It is 2.5. The current ratio must be 2.5. So benchmarking is available there that you should perform as well as the industry average is given. So that is 2.5. Same is the case with the building material. Same is the case with the grocery stores. Same is the case with the merchandising stores. So you have to go through the benchmarking. यहाँ तक कोई बात नहीं समझ आई? जी सर आगे चले। सर एक चीज पूछनी थी, जी करंट जी रेशियो और क्विक रेशियो में क्या फर्क है? बेटा अभी हम वो पढ़ेंगे, आगे चल के हम इसकी कैलकुलेशंस पढ़ेंगे सारी ना। अभी जस्ट एक ओवरव्यू सर ये आपको दे जस्ट रहा हूँ। एग्जांपल दे। जी सर ठीक हो गया। ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे इसको। ओके सर। जस्ट ये अभी हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि करंट रेशियो, अगर कोई भी किसी किस्म की रेशियो, आप करंट रेशियो को भूल जाएं, आप कोई भी अगर कोई रेशियो जोन सी है वो आप निकाल लें कि आप लोगों की रेशियो इतनी है। आप इसको थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे लगा के देखेंगे। अगर हम कहते हैं कि जी मैं अपनी तनख्वाह में से 50,000 फर्ज करते हैं सेव करता हूँ एक साल में, लेकिन उसी तनख्वाह में से मेरा अगर एक दोस्त है वो 80,000 रुपया साल में सेव करता है, तो इसका मतलब है कि मैं भी 80,000 सेव कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए। जी सर। ठीक है। फिर हम एक और चीज देखेंगे कि उतनी ही तनख्वाह में सब जो एवरेज है वो क्या है। एक दो तरीका ये है कि मेरा दोस्त 80,000 सेव कर रहा है, मैं ऑन एवरेज देखता हूं कि 50,000 ही जो लोग हैं मेरी तनख्वाह वाले वो 50,000 ही बचा सकते हैं पूरे साल में।
तो फिर मैं कहूँगा ठीक है 50,000 इज द बेंचमार्क, इंडस्ट्री एवरेज जो सी है वो 50,000 ही है, तो ठीक है मैं सही परफॉर्म कर। ओके सर। ठीक है, यस सर। चलें आगे चलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की तरफ। व्हाट इज बेसिकली द टाइम सीरीज एनालिसिस इज this is basically the comparison of the current and past performances using ratios enable analysis to access the firm's progress। हम अपनी ही फर्म के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ करंट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वेदर वी आर इम्प्रूविंग, वेदर वी आर नॉट इम्प्रूविंग, whether our sales are increasing, whether our sales are not increasing, or it is a decreasing trend, or it is going to be a upward trend। ठीक है, this time series analysis also called the trend analysis। This is the combined analysis of the cross-sectional and the time series view of Bartlett Company's average collection period। You can see this is a bar. This is basically a bar chart, right? It's a line chart or a bar chart? Line chart. Okay, that's good. At least you are awake. This is a line chart. If you can see on the x-axis, we have given the timeline, and on the y-axis, there is an average collection period in days available. So the average collection period of the Bartlett Company is a bit more. Before it was below the industrial average, but now it is increasing and increasing and increasing. Then so just you should understand that we are going ahead of the industry average, so we should monitor what collection period should be there। तो इसको हम थोड़ा सा आगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे इनकी, तो तब हमें पता लगेगा कि ये कैसे जो है ना काम किया जाता है। तो हम ये अब कुछ कैटेगरीज की तरफ चलेंगे जिसके अंदर लिक्विडिटी रेशियोज आ जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे करंट रेशियो की और एसेट टेस्ट रेशियो की। तो यहाँ पे मैं क्लास को जरा डिस्कनेक्ट करता हूँ, आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा से इसको कंटिन्यू कर सकें। ओके सर।